Hi guys, welcome back to my channel. My name is Mansi. I hope you all are safe and doing well. So guys, I use this introduction video of mine जो मैंने previous video में reveal किया था for the first time, and I hope you guys enjoyed watching it और अच्छा लग रहा है मेरे channel के साथ. And yeah, वो video भी आता रहेगा continuously after my hi guys. So yeah, bear with me. आज का video guys is the most requested video by my lovely female subscribers. एंड यू गाइज नो दैट आई एम अ कैबिन क्रू. तो सबको मेरा जर्नी जानना था, मोस्टली माई फीमेल सब्सक्राइबर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सजेशन. और मैं बहुत टाइम से वो सजेशन आ रहा था, बट यू नो I was not paying much attention to that, but I thought, let's kind of make it like a, well, not a vlog, but a talk show or a talkative video wherein I will tell you my honest journey with you guys and how I got scammed, or you can say मैं फंस गई उस थोड़े टाइम के लिए. So yeah, it was a life learning lesson for me. And I literally, there were people who saved me, like not people, one girl or one my favorite human who saved me. So yeah, sit back, relax, watch until the end, and please take a minute and subscribe to my channel. It will help me a lot, and I love your support. It keeps me going on and on and on. So yeah, stay tuned, watch until the end. And to start off with, मैं कैसे बताऊँ it, I was like मैंने एक मूवी देखा था, आई थिंक आलिया भट्ट का था वो मूवी. आई थिंक बद्रीनाथ की दुल्हन है और सम मूवी जिसमें वो एयर होस्टेस होती है. तो आई वॉज जस्ट आउट विद माई फ्रेंड्स, आई वेंट टू सी दैट मूवी. एंड मेरे सडनली दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया. एंड सिंस देन आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पायलट थिंग. तो मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगी एविएशन फील्ड में, बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं है एविएशन फील्ड का. ओके, सो आई डिडंट वांटेड टू गेट, उतना मेरे में अक्ल थी कि मुझे फुल मतलब आई डोंट वांट टू गेट चीटेड. सो मैं डायरेक्टली पायलट की इसमें नहीं घुसूंगी. लेट्स ट्राई एंड गेन कैबिन क्रू के एक्सपीरियंस से थोड़ा सीखने को. आई विल मीट सम पायलट्स एंड आई विल आस्क देम कि एक्चुअल में कैसे होता है. तो उतना अक्ल मेरे में था, इसलिए मैं directly I didn't jump onto the pilot thing. But I was like कि नहीं, cabin crew बनना है. And I started watching videos, and a very close family friend of mine, her name is Kajal. So she was already a active like online cabin crew. वो काम कर रही थी एक airline के साथ. And I used to literally she is my inspiration, and whatever it is today, I am because of her, and I proudly say that. And I have no nothing, मुझे कोई भी पूछेगा ना मैं आज यहाँ पे कैसे हो, तो it's because of her. And I just love her. So start करने के लिए I finished my 12th. मैंने मेरा 12th finish कर लिया. And then I went to Mumbai. ठीक है, मेरे मामा जी के पास या मेरे चाची के पास में रह रही थी. I don't exactly remember. फिर ना मैंने ना पागलपंती किया. Even though she was working, मैंने उससे पहले पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा. I just went and I enrolled myself in one of the institute. Now you know what institute is that. ठीक है, I don't want to name it. I don't want to defame anyone, so I will not take the name. But I went in and I paid the amount, like first installment, and I took admission. एंड मैं एक दिन गई. ठीक है, फर्स्ट दिन जाते ही उन्होंने अपना इंडक्शन सब दिखाया. माई मॉम वॉज देयर एंड वी वर लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज द बेस्ट प्लेस आई हैव कम. And then I was like, I went happy home, and I messaged Kajal Di. I call her Di because she's my, for me she's my close sister. So I messaged her on Snapchat, I remember, and I told her, hi Di, thank you so much for your support and guidance. मतलब कुछ लिया नहीं था ऐसे गाइडेंस वगैरह, बस I used to see her. So like, thank you so much for inspiring me. मेरा एडमिशन they selected me, मैंने ऐसे बोल दिया. So she was like, oh my god, I'm so happy that you got selected. She's like, where you got selected? So I told I got selected here. She's like, oh god, are you crazy? Why did you do it in the first place? Then she told me how she got cheated. She got trained there and they didn't help her in any way. She got into this airline by her own self, like खुद से interview जाके दिया and all that jazz. Okay? I was like, what the heck, मतलब
आई वॉज सो पैनिक बिकॉज वो पैसे मैंने मेरे अंकल से मांग के लिए था. आई स्टिल रिमेंबर I don't belong to a very rich family, not even rich, मैं बोलती हूँ very. I belong to a very middle class family wherein I didn't wanted to trouble my parents. So मैंने I was like mom अब क्या करूँ, मतलब पैसे तो भर दिए हैं, and this is like a complete not needed thing, मतलब literally it was not needed me to go there. And then she was like, you do one thing, you come, I will 2 दिन का 3 दिन का I will nicely ready you for the interview. And you are she told me that you have so much potential that you will go in walk in and you will crack it. So she showed that faith and encouragement in me, and I was like, wow. So that's why I love her so much. And secondly, my mom, I just love my parents. And my dad, of course, क्योंकि दे डिडंट टेल मी एनीथिंग, मतलब मेरे को थोड़ा भी नहीं डांटा. मतलब वो पैसे गए, मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया कि मॉम आई विल मेक यू प्राउड. मैं जितने पैसे गए हैं ना, मैं आपको 3-4 महीने में डबल करके दूंगी वो, क्योंकि प्लीज़ जस्ट हेल्प मी दिस टाइम. एंड so my moms are great. I mean, I don't, if I start talking about parents now in general, I will start crying in this video, and I don't want to do that. So my mom was like, don't worry beta, हम कर लेंगे. But फिर भी एक लाइक लास्ट ट्राई करके हम लोग गए वो उधर पैसे मांगने के लिए, क्योंकि मैं एक ही दिन गई, एक ही दिन में ही मैं सिलेक्ट हो गई ना उनके हिसाब से. तो आई वॉज लाइक सेकेंड डे आई स्टॉप गोइंग. आई वॉज लाइक, आई टुक डिसीजन, मैं नहीं जाऊँगी, मतलब बिल्कुल नहीं जाऊँगी वहाँ पे. So we went there and we were like, दे दो हमारे पैसे. I lied to them that we need to transfer suddenly to Pune. And कुछ ऐसे झूठ बोला कि I am not interested right now, please give my money back, और हमको बहुत ज़रूरत है पैसे का, ऐसे we told them. And they denied. मतलब it was like literally a fraud. I don't want to name again, but it was completely a fraud, whatever it was. Came home, निराश आ गए हम घर पे. मेरी मासी भी आई थी मेरे साथ, जहाँ मैं रह रही थी. And we were like so disheartened, but my mom showed me so much support. मतलब इतना support दिया ना, और इतनी हिम्मत दी मेरी मॉम ने. मेरी मॉम बोली कि मानसी जाऊ दे, जे गेलं ते दान केलंस तो, whatever you did, you just donated that money to that thing, and दान कर दिया मतलब मैंने वो. सो आई वॉज स्टिल फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली इवन 1000 रुपीज़ इज़ अ वेरी बिग. 1000 क्या, 10 रुपये 100 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है इवन फॉर मी. मतलब नाउ आई कैन अफोर्ड, बट फिर भी मैं ना एक बार सोचते हो, स्ट्राइक होता है मेरे दिमाग में, यार मानसी इतना पैसा है. सो एंड मनी इज़ समथिंग सबके पास नहीं होता है, एंड यू शुड रिस्पेक्ट हाउ मच यू हैव एंड हाउ मच कैन यू स्पेंड. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो इन माई वीडियोज़ की ऑलवेज थिंक एंड स्पेंड. और उसके बाद वी वर लाइक कि लीव इट. फिर काजल दी ने बहुत संभाल के लिया. शी ट्रेन मी फॉर लाइक 2-4 days without anything. She's like a very true and honest human being, and I just love her. If you're watching this, Kajal di, I just love you. And I don't have any, I don't know how will I ever return the I just don't know how to say. मतलब मेरे को समझ में रहना. I owe you so much in my life, and thank you so much for that, and I love you so much. So उसके बाद I got trained with her. I was still in Mumbai तभी, and then Jet Airways का interview आया, and I told her I just want to try Jet Airways, and I really love Jet Airways because of the uniform. And we all know Jet Airways was like A1 top 1 airline तभी. And cracking Jet Airways interview is very difficult guys. मतलब अभी रुको, एंड तक देखो, मैं आपको बताऊंगी आगे का. आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 2018 जून का महीना था, और आई वॉज विद हर तभी. एंड 11th जून को जेट एयरवेज का इंटरव्यू था पुणे में. मतलब लिटरली पुणे में, विमान नगर में. घर के मेरे घर के बहुत क्लोज, मतलब हार्डली 7-8 minutes away from my house. So I was like नहीं यार, I was like दी थोड़ा ना I had that money का thing, and I was like सिलेक्ट हो गए तो अच्छा हो जाएगा. मतलब मेरा मेन मोटिव था कि कैसे भी करके मुझे मेरे पेरेंट्स को वो पैसे लौटाने हैं जो मेरी वजह से ख़राब हो. बिकॉज मैंने ना I took a very hasty decision, to be very honest. मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी. I'm sorry mom dad and whoever I've hurt by this decision, but वो बहुत hasty और बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ decision था. Guys, do not do this. I know young blood, and I was just 18, like literally 18. मेरा birthday भी नहीं हुआ था. I think 18th birthday नहीं हुआ था मई में.
Yeah, so I was like literally I was like oh god, I'm like wow this is so nice, कितना अच्छा उन्होंने presentation induction लिया and they told me that I got selected, मुझे लेना ही admission लेना ही है लेना ही है. And I borrowed money from people, मतलब people as in my family, and वो बहुत regret था मेरे दिमाग में. So I told her मुझे please जाने दो. She's like yeah don't worry, you go, but I don't want to keep your hopes high. मतलब as she was working already for so many years, she told me how are the standards of hiring in Jet Airways. Guys, trust me, whatever she said, it was so true, and I experienced it myself. Then finally, it was 11th June. Interview was on 11th June, Pune में in Novotel, विमान नगर रोड का. And then I was in Mumbai. I think 9th या 10th को मैं मुंबई में ही थी तभी. And then immediately very next day I went to Pune, and that time I was leaving staying in Mumbai alone, मतलब like alone as in मेरे फैमिली के घर पे, बट माई मॉम डैड एंड माई भाऊ मतलब मेरा ब्रदर वॉज इन पुणे. सो मैंने अकेले मतलब हो गई 12th हो गई, एग्जाम हो गई, 18 हो गई, अब मैं जा रही हूँ, मतलब इट वॉज लाइक दैट. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ माई हाउस at a very early age, and it was totally my decision to work because I was never interested in this corporate jobs and all. मतलब तब भी हाँ, अभी आई एम इंटरेस्टेड. तो इट वॉज लाइक मैं जाती हूँ एंड माई पेरेंट्स आर सो कूल. मतलब my parents are like the world's best parents. Even for you, your parents are the world's best parents. For me, they are my world. And फिर they were like ठीक है जाओ, एंड फैमिली के घर पे ही रह रही थी, ऐसे नहीं कि फ्रेंड्स एंड मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा टू स्टे एट फ्रेंड्स हाउस लाइक सडनली, और इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट अ जोक. ट्रेन लिया, मैं आ गई पुणे, एंड ऑफकोर्स घर ही आऊँगी मेरे. एंड देन द डे हैड कम, माई इंटरव्यू डे. आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज सो ग्रेट. अभी भी याद आती है ना. इट्स लाइक आई विल शो यू पिक्चर मेरे फॉर्म का. आई हैव अ फॉर्म पिक्चर ऑफ दैट इंटरव्यू. वेर इज इट या it's here. I don't know if you can see, it's written Jet Airways here. I don't know. This was my form, so you can see Jet Airways. Yeah, so yeah, that was it. And I filled it. So yeah, it was, yes, 11th of June 2018. Yeah, it was 4:13 p.m. So I'll tell you the story. So I went there. I went very early, as I said. मैंने मेरे वीडियोज़ में भी बोला है, मैं कुछ 8 बजे वहाँ पे पहुँच गई और 9 बजे स्टार्ट होने वाला था. एंड मेरे मॉम डैड एंड मेरा भाई में हमारी छोटी सी कार में मुझे छोड़ने आए, ठीक है, नोवोटेल में. द पीपल वर लिटरली ओ गॉड, आई कैन नॉट टेल यू. मतलब ये आप देख रहे हो दिस थिंग्स एक्सटेंशन, आई स्टार्टेड डूइंग इट नाउ. बट तब भी लड़कियाँ इतने अच्छे ड्रेसअप होके आई थी ना. आई स्वेयर आई वॉज लाइक नॉट जेलस, नॉट स्टन, बट मैं डर गई थी. द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ lifestyle the girls are having, and it's their privilege of course. but जो ड्रेसअप वगैरह होके आई थी, और मैं एकदम ऐसा नल्ली सी करके आई थी. मतलब काजल ने taught me how to do makeup and all, but I just had started. मतलब वो मैंने फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मेकअप लिया होगा एंड मैंने किया होगा. सो इट वॉज लाइक I don't know. I am proud of my makeup which I did earlier that time, but it was very fun. Got down, I came up, and I think I was wearing a cream color shirt, a black skirt, Amazon से लिया था सारा, stockings, black shoes, and all of that. And I will put a picture here somewhere what I wore on my interview day. And that was same guys, वही मैंने उसी दिन फ़ोटो खींचा था शाम को जाते ही. And my interview, first they checked height and weight, and luckily I was in my BMI thing. And then उसके बाद हुआ main interview, जो there were most around 600 to 700 people guys. और 2018 था तो कोविड नहीं था तभी. एंड सो जेट एयरवेज हायर्स बोथ मेल एंड फीमेल, तो सारे लड़के लड़कियाँ, और इतने भारी लड़के थे ना जिसके लिए मतलब वेरी वेल ग्रूम गुड लुकिंग गाइज वर देयर. बट आई वॉज वेरी फोकस्ड एंड वॉट आई वॉन्ट. सो या, सो आई वेंट एंड मेरा इंटरव्यू लिया एक आई थिंक ऑन जेट एयरवेज क्रू ने ही, जो बहुत सीनियर थे, लाइक उनकी लाइक हाईएस्ट चेक क्रू होगी वो. सो शी हैड टेकन माई इंटरव्यू, एंड देवर लाइक HR भी थे उनके, सीनियर्स भी थे, बट शी टुक माई इंटरव्यू. एंड आई स्टिल रिमेंबर शी commented me on my eyebrows. So now I do my eyebrows like ऊपर से नीचे से, and I just brush it, I just fill in. तभी मैंने literally line मारी थी ऐसे, and I didn't brush it off, like I didn't smudge it. So she's like,
are you like doing it for the first time, or it's your first time? But I gave my interview very confidently, like literally the way Kajal di taught me or told me how to do it, I exactly did like that, and I'm so grateful that it worked out and I did exactly same, but my all my words, but in a very confident and smiling way, even though I was fumbling and galat thoda grammar mein hava ho raha tha, but I thoroughly, she told me fake it till you make it. I still remember that statement which she told me to remember as a crew, that you have to keep smiling and you have to keep talking, even though it doesn't matter that if it's going wrong or kuch bhi ho raha hai, so just keep talking. And then that was it, and wo ho gaya. Then she told me you can wait outside, and interview chale, and then thode time ke baad around 2:30 or 3 o'clock they started taking names. And trust me guys, I'm not kidding, 700 or 600 लोगों में से they only selected 16 people. I'm not kidding. 2 guys and 14 girls, literally. मतलब 2 लड़के select हुए और 18 और 14 girls, and out of that 14 girls I was the one. And everybody was like shocked because I was so underdressed, I was so under makeup, मतलब it was just and I was the youngest, I think, amongst them. They were like mere se bade the, like 20 21, but I was the like youngest 18 years old. And I still remember, I am still in that JTVS का group जब तभी बना था. And then हमारा GD हुआ, ग्रुप डिस्कशन. उसमें ऐसे ही टीम वर्क का वगैरह लिया था और कुछ ऑब्जेक्ट दिया था और उसको डिस्क्राइब करना था एज अ टीम. सो उसके बाद हमको बोला गया था दैट यू विल रिसीव अ कॉल इन नेक्स्ट 48 आवर्स और सो, और नेक्स्ट एक महीना भी लग सकता है, समथिंग लाइक दैट. एंड या दैट वॉज इट. इट वॉज आई थिंक 4 PM, 4 साढ़े 4 कुछ हो गए थे. देन दे टोल्ड अस टू फिल द फॉर्म एंड ऑल, एंड देन वी केम. दैट्स व्हेन आई फिल दैट फॉर्म, जेट एयरवेज का. And yeah, I came home and my parents were so happy, and I personally was so happy that I was thinking कि मेरा हो गया अभी, because everyone told me. And when I told Kajal di, she was like shocked and she was so proud and happy for me that I cracked JTVS का interview, because for me it was my life का first interview where I cracked it, and I have no idea about aviation this thing, and I just went and I gave the interview, and it was the most amazing experience for me. Yeah, so वो हो गया. And then I went home and I was like, mom, हो गया almost. And I almost cracked it. And there was this JTVS का news that they started the pay cuts and all. And ever since that thing, aviation market में hodgepodge हो गया था, that how come a JTVS company so big can have these troubles. So to be on a safer side, Kajal di told me 24th June को मुंबई में इंडिगो का इंटरव्यू है. So I was like, wow, at least I will if I have cracked Jet Airways, I can definitely crack Indigo. And but for this interview as well, I did my research and I did my studies and everything, and I made sure that I'm preparing myself, as I have said earlier to you guys, that always prepare and go take interview seriously. And just like this, I took this interview seriously and I went to Mumbai alone again. And then I went for the interview, and Kajal di ने उसके friend का contact दिया था, who was also going for that interview. And that was Kajal di's friend, and she became my best friend for life. I just love her. Her name is Samatha. And Samatha, if you're watching this video, I just totally love you. And because guys, I just owe her so much of my life as well, because in my dark and ugly situation time in my life, she has helped me like a mother, a sister, and everything. Matlab, I cannot tell you that story, but it was, I just love her. And we were also roommates in Cochin, and we were almost, हमारा Indigo का batch आगे पीछे था. Oops, I already spilled the thing that I selected in Indigo, got selected in Indigo. So yeah, I went to Mumbai, and 24 June जून को था वो interview. उसका भी I have a picture of that form, and I will just show you that. So this was my Indigo's. You can see the logo. I don't know. Yeah, you can see the logo here. That's the form of Indigo, and that's my picture here. And I went for 320 video interview, aircraft type interview. So yeah, I went there. So Kajal told me that's her number, just call her up and you can go
एक साथ मिल जाएगा. So I went there, उधर भी BMI चेक हुआ and height and weight that thing, and then we went. और वहाँ पे ऐसे था कि 10 girls and 1 interviewer, and उन्होंने सेम क्वेश्चन सबको पूछे, सेम लाइक काइंड ऑफ. और उसमें वो लड़कियाँ भी थे जो जिन्होंने वो कर लिया था, लाइक मैंने जो स्टार्टिंग में वो ज्वाइन करने वाली थी मैं एयर होस्टेस बनने के लिए. दे वर दैट गर्ल्स ऑल्सो, एंड आई सॉरी टू से दिस बट दे डिडंट गेट सिलेक्टेड इवन आफ्टर गोइंग थ्रू दैट रिगरस ट्रेनिंग विच दे से. सो या मतलब जिस बोलने का है. एंड मी एंड माई फ्रेंड वी बोथ वर सिटिंग टुगेदर लाइक समथा एंड मी, एंड आई गेव द सेम इंट्रोडक्शन विच आई गेव इन जेट एयरवेज, एंड गाइज voila, I got selected, and I'm so proud and so happy that Kajal Di told me that, you know, how कैसे बोलना है. And of course there was my this thing that she always told me that fake it till you make it, smile and talk like this. You have to constantly smile and talk, and when you go for an interview वो खुशी ऑलरेडी रहती है, तो फेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, you know that. And you can just smile and talk and give your best, and you know guys, we got selected, both of us we got selected, and that was the best time. And उन्होंने हमसे ये फॉर्म फिल कराया जो मैंने अभी दिखाया आपको, and then we got immediately a call after like a month or so. So जुलाई में हमारा second round हुआ in again Mumbai. I don't remember the hotel but in Mumbai only. So वहाँ पे हमारा final round हुआ wherein they again checked our height and weight, and there was a final, you know, main round, last round we can say, that was with Suman Chopra ma'am. एंड वी वर 3 गर्ल्स एंड 1 इंटरव्यू. उसमें भी समता और मैं साथ में थे, हम तीनों गए, एंड वी से वहाँ पे उन्होंने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड आई गिव द सेम इंटरव्यू. गाइज इफ यू वांट टू नो व्हाट आई सेड इन दैट introduction of me, so do let me know. I'll make a separate detailed video on it, and I hope it helps you crack your videos too in the interview. That main घड़ी आई जब सबके नाम अनाउंस हुए. आफ्टर दैट 2 rounds we were like, अब क्या होगा. एंड व्हेन दे फाइनली कॉल्ड आउट आवर नेम्स टू स्टे, इट वाज लाइक पहले उन्होंने नाम लिया, ठीक है, नाम सबके सेपरेट किए, एंड वी बोथ पार्टीज डिडंट नो कि कौन घर जा रहा है और कौन रुक रहा है. इट वाज सो लाइक ऐसे हो रहा था. एंड देन दे वर लाइक यू गाइस स्टे एंड यू गाइस गो, एंड वी वर लाइक सो हैप्पी. आई जस्ट कॉल्ड माई मॉम एंड लाइक मॉम ऑलमोस्ट हो गया है, बट कल के कल मेडिकल राउंड है, एंड मेडिकल वॉज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय माई कंपनी. एंड या नेक्स्ट डे मेडिकल हुआ, एंड लकीली माई मेडिकल्स वर क्लियर. एंड सो मैंने जुलाई में किया, मेरा मेडिकल्स हो गया. बट द थिंग वॉज आई हैड टू वेट सो लॉन्ग टू गेट माई बैच. तो मैंने जुलाई किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दैट 3 months गाइज मेरा इतना मतलब ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया था. बिकॉज माई फ्रेंड विच वन मोर फ्रेंड वी मेड नियोमी करके, उसको तुरंत बैच मिल गया. मतलब शी ऑल्सो गेव इंटरव्यू विद अस ऑन 24th of June, एंड बट शी गॉट बैच अर्ली. समथा को और मेरा वी वर लाइक लिटरली कॉन्स्टेंटली हम लोग ईमेल कर रहे थे क्या है, मतलब वी वर सिलेक्टेड, ओके, वी गॉट आर फाइनल ज्वाइनिंग लेटर एंड एवरीथिंग, ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग, बट वी वर लाइक यार होगा या नहीं होगा, क्या हो गया. एंड ऑलरेडी जेट एयरवेज का टेंशन दिमाग में था. वी वर लाइक यार ये कंपनी का भी ऐसे ना हो जाए एंड ऑल दैट जैज. But luckily then on Samatha went early. She went on 18th October or something. Her batch was that assigned. So uska batch tha 479 and my batch number was 480. And my they booked my flight on 30th of October, and 31st October was my joining in Indigo, and I'm so happy and so proud of myself. Matlab it's mesmerizing नहीं बोल सकते. It's an incredible feeling to join a company, when you're so young and you don't know anything, and you have done that with, of course, with somebody's help, but you have done it on your own. So I'm so proud of myself, and it was the happiest moment. And I just told my mom abhi se, you don't have to worry, I'll pay back all your money. And guys, trust me, I did that. मतलब 3 months का training, उसमें भी हमको stipend मिल रहा था, but इतना नहीं मिल रहा था. But as soon as I started working, and I got based out of Cochin, Kerala, and it was 3 months training. I will make a separate video on this, on my training part, and do let me know what you want to know about my training.
And yeah, guys, that was it for my my cabin crew journey, and it is 100% honest. I haven't hid like मैंने कुछ छुपाया नहीं है मेरे journey के बारे में. ये actually ऐसा था. Actually I got fooled, and I just want to tell you guys that before ending this video, कि do your research even before joining any classes or anything. It's not needed. मैंने day 1 से अपने videos में बोला है, you are so self sufficient and so uh, efficient, we can say, to crack interviews on your own. Walk in, jao, interview de do, and just get done with it. You don't have to join any. Here I am today, gorgeous, and I was not like this when I joined as a cabin crew. I was completely nalli ladki jisko kuch nahi aata tha karne. But yeah, life is never same. It can change overnight, and for me it did on in that 2018 October, and whatever, that year changed it. And this year, every year has been phenomenal for me, and I just love it. And yeah, guys, on this note, I will end this video. I know it has been too long, and I really hoped I didn't bore you. If you want to know anything about my journey, do let me know. And training, whatever, like I said, the introduction part where you have to give it on your interview day. And if you have any suggestions, any area of improvement for me, do let me know in the comment section. I will be happy to do it. So yeah, see you soon, guys. Thank you so much for watching my video, and see you soon. Bye bye.